Hello my dear children, it's me Sneha Sharma welcoming you all back to BYJU'S. We are in the process of discussion of NEET 2020 paper, so let us quickly begin the session and complete all the remaining questions of NEET 2020 paper. Let's start. Let us have a look at this question. Which of the following statements are true for the phylum Chordata? Okay, so we are looking at phylum Chordata here और उसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है. हमें देखना है कि इन सब स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं. एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. In Chordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout the life. तो I think ये आपको already पता है. Chordata में notochord जो होती है does not extend from head to tail. It's present only in the tail and that too only at the larval stage, right? So larval tail में Chordates की जब हम बात करते हैं तो notochord होती है. तो obviously ये जो statement है ये आपका गलत statement हो गया. आगे चलते हैं. In vertebrates, notochord is present during the embryonic period only. Yes, very much. This statement is a correct statement. आगे चलते हैं. Central nervous system is dorsal and is hollow. Yes, chordates में central nervous system जो होता है वो dorsal होता है और वो hollow होता है. And जब हम बात करते हैं non chordates की, in that case जहाँ पर भी nervous system present होगा वो होगा ventral and that is usually solid. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो हमारे पास अब तक स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही हैं. आगे चलते हैं. Chordata is divided into 3 subphyla, that is Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata. तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया कि Hemichordata जो होता है वो chordate में belong नहीं करता है. It is a separate phylum which is there as a part of non-chordates. Yes, recent टाइम्स से पहले, मतलब पहले क्या होता था कि हेमिकॉर्डेट्स को जो ना कंफ्यूजन के फॉर्म में रखा जाता था, इन द सेंस कि कभी कभी उसको एज्यूम किया जाता था कि वो कॉर्डेट्स है या फिर डज इट बिलोंग टू नॉन कॉर्डेट्स एग्जैक्टली. बट इन रीसेंट टाइम्स इट्स क्लासिफिकेशन इज मोर टुवर्ड्स द नॉन कॉर्डेट्स एंड हेंस वी क्लासिफाई हेमिकॉर्डेट्स देयर. ओके, अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, जहां पर 3 सबफाइला की बात करें तो वहां होते हैं हमारे यूरोकॉर्डेट्स विच इज ट्यूनिकाटा, फिर आते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स और फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स, राइट, वर्टिब्रेटा जिसे हम बुलाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम ऑप्शंस देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा बिकॉज दिस इज वेयर इट इज लिस्टेड एज सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट. ठीक है, मैं आपको बहुत ही क्विकली इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंटर्स दिए थे उससे रिलेटेड थ्योरी याद दिला देती हूँ. सो जब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, सब फाइला इसके कितने हैं? सब फाइला 3 होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन कम्स दी वर्टिब्रेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, this is image of a tunicate where you are very clearly seeing that notochord is present only in the larval tail and not from head to tail and that too throughout the life, right? इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो था that was an incorrect statement. आगे चलते हैं. We have cephalochordata as the second subphyla of phylum chordate. तो यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है. इसके ऊपर बेस्ड कितने सारे पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो ये है हमारा ब्रांकियोस्टोमा और इसको हम बुलाते हैं एम्फियोक्सिस या फिर लैंडस्लिट भी. लैंडस्लिट मतलब और एम्फियोक्सिस क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है एकदम ऐसे पतली सी लंबी सी स्ट्रीमलाइन काइंड ऑफ बॉडी इट हैज, राइट. अब यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होती है that extends from the head to tail. Cephalo, right? Cephalochordata है तो cephalo word refers to head, right? Cephalus is this part. Cephalo is referring to head. तो इनमें या फिर cephalochordates में बेसिकली जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से लेकर टेल तक होती है और पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है. Hence we in fact call them as cephalochordata. यूरो में मतलब बेसिकली it was towards the tail, so that is why we were calling them as Urochordata. अब तीसरे सब फाइला पे चलते हैं विच इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट्स, हम खुद वर्टिब्रेट्स हैं तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दो सब फाइला वेयर यू रियली नो व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट. तो वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ एक एम्ब्रियोनिक पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट होती है ना. तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे. जब हम लोग
स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, विच वॉज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है वेंट्रली प्लेस्ड, वो होता है सॉलिड, राइट, क्योंकि वहां पे नर्व कॉर्ड के फॉर्म में होता है. यहां पर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज गोइंग टू बी डोर्सल, सिंगल एंड हॉलो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसा मैंने बताया, मैं वापस से कंपैरिजन पॉइंट दे रही हूँ, वो पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट जस्ट सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. जब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, इट इज हॉलो and it is single, but when you talk about non-chordates it's going to be ventral side of the body. आपको पता है this is ventral side of the body and this back side is the dorsal side of the body. हमारी body में हमारा जो heart है, जो pumping organ है, that is placed on the ventral side of the body and the backbone, the spinal cord etc, vertebral column, all that is on the dorsal side of the body. तो मैं ये बोल रही थी कि non-chordates में उनका जो central nervous system होता है, जितना भी develop हुआ है, obviously वो हमारे कॉर्डेट्स जितना नहीं डेवलप होता है, बट जितना भी डेवलप हुआ है दैट इज बिकॉज दैट इज बेसिकली प्लेस्ड वेंट्रली, इट इज सॉलिड एंड इट इज डबल. यू रिमेंबर कॉकरोच वगैरह, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज टू अंडरस्टैंड कॉकरोच, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है. तो कॉकरोच में आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है दैट देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना. This is exactly the point of difference I was telling you all. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, which is statement 2 and statement 3 are correct about the phylum Chordata, right? I hope you all got this question correct. Okay, so here we go with the next question. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम. बट होता क्या है कि इवन दो हमें ये सब फाइलम सीक्वेंस में याद रहते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इन बिटवीन, यू जस्ट टेक टाइम अ लिटिल बिट टू काइंड ऑफ सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन माई पॉइंट इज दैट इट इज वर्थवाइल टू स्पेंड टाइम ऑन सच क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन का जो आंसर है, जब आप थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं याद करने में, बट इसका आंसर श्योर शॉर्ट होता है ऑलमोस्ट, राइट. देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट इज लाइंग देयर. तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करना वर्थ होता है इन ऑर्डर टू गेट दैट +4 मार्क्स. ओके, लेट अस ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस. एस्केलमिंथस, एनालिड्स और एनालिडा, टीनोफोरा या फिर प्लैटीहेलमिंथस. एस्केलमिंथस क्या है, आपके राउंड वर्म्स हैं. एनालिड्स क्या है, बेसिकली अर्थवर्म वाली फैमिली है. फैमिली का मतलब मैं यहाँ पे ग्रुप की बात कर रही हूँ, नॉट लाइक अ क्लासिफिकेशन वाइज फैमिली. फिर आते हैं टीनोफोरा. टीनोफोरा आर द बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट. फिर आते हैं प्लैटीहेलमिंथस व्हिच आर योर फ्लैटवर्म्स, है ना. तो अब जब आप इसको याद करेंगे तो ध्यान से याद करेंगे. मैं याद दिलाती हूँ आपको इनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपको एक बार याद दिलाऊंगी मैं. जब हम बात करते हैं एस्केलमिंथस, एनालिड्स और प्लैटीहेलमिंथस के, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है देयर बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स व्हिच आर कॉल्ड एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. जब हम टीनोफोरा की बात करते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स. ओके, अब गोइंग बैक टू एस्केलमिंथस, जब भी हम लोग बॉडी कैविटी की बात करते हैं वी यूज द टर्म सीलम. ओके, एंड जब भी हम बॉडी को कुछ स्पेसिफिक प्लेन से अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपली स्पीकिंग सिमेट्री, राइट. सिमेट्री यू हैव लर्नड अबाउट, देयर इज bilateral symmetry, there is radial symmetry, there is biradial symmetry also, and there is like no existence of symmetry. For example, asymmetrical organisms आप देखेंगे तो sponges are like the best example. Most of the time sponges do not show any symmetry, right. तो अब सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं एस्केलमिंथस से in terms of symmetry and in terms of coelom. तो एस्केलमिंथस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं. वर्म्स जो होते हैं ना वो यूजुअली बाइलेटरली सिमेट्रिकल ही होते हैं. तो चाहे वो राउंड वर्म हो, चाहे वो लाइक एनालिड्स हो, चाहे वो फ्लैटवर्म हो, दीज आर यूजुअली बाइलेटरली सिमेट्रिकल, राइट. सो bilaterally symmetrical, I just like lost my track of writing down here. Okay, so bilaterally symmetrical के साथ में इनमें जो सीलम होता है that is basically like a pseudocoelom. Okay,
सूडोसीलम क्या होता है, मैं इसके थोड़ी देर बाद ही आपको इमेज के साथ में समझाऊंगी कि क्या होता है। तो एस्केलमेंथस हो गए बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सूडोसीलमेट, हेंस दिस इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर। एनालिड्स होते हैं, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड दे हैव प्रॉपर ट्रू सीलम, राइट, सो दे बिकम द सीलमेट्स, ऑब्वियसली ये भी राइट आंसर नहीं होगा। फिर आते हैं टीनोफोरा, तो टीनोफोरा जो होते हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, राइट, बट सीलम की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती बिकॉज दे आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम योर डिप्लोब्लास्टिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर आते हैं प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस जो होते हैं ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो होते ही हैं, प्लस इनमें कोई भी सीलम नहीं होता है, सो दे बिकम दी एसीलमेट्स, राइट। सो आंसर क्या होगा सही वाला, अब आप समझ ही गए हैं, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, मैं आपको एक बार ये सिमेट्री के बारे में, स्पेशली बाइलेटरल सिमेट्री एंड सीलम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। बाइलेटरली सिमेट्रिकल कब होता है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली फ्रॉम वन प्लेन, राइट। यहां पर आप इस एनिमल को देख रहे हैं, अब अगर आप इसे इस प्लेन के अलावा, लाइक द प्लेन दैट वी हैव शोन यू हियर, इस प्लेन के अलावा किसी भी प्लेन में डिवाइड करने को ट्राई कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि हमने कोई ऐसे इस तरीके से डिवाइजन कर रहे हैं, क्या वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा? नहीं ना। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ symmetry which comes by division in only one plane, which is going to lead to formation of 2 equal halves of the body, that is what is called as bilaterally symmetrical. Okay, we go on to coelom now. सीलम एग्जैक्टली क्या होता है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था, बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? द कैविटी दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ जिससे आपको इमेजिन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यू नो दैट योर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ and it ends with the anus, and in the meanwhile हमारा pharynx होता है, esophagus होता है, then हमारा stomach होता है, small intestine, large intestine, ultimately rectum and then anus। यही आपने सीखा हुआ है। This is what the flow of alimentary canal is like। तो अब ये जो पूरी ट्यूब है alimentary canal की, इसके बाहर की स्पेस before the whole abdominal wall, think of the thoracic wall, think of the abdominal wall। तो ये जो स्पेस है बीच की, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की और बॉडी वॉल के अंदर की, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज सीलम, ठीक है। अब आपको शायद सीलम एसोसिएट करना थोड़ा सा आसान हो गया होगा, राइट। ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इसलिए मैंने आपको बताया था टीनोफोर्स में तो सीलम का सवाल ही नहीं आता है ना। यहाँ पर जब आप देखते हैं, आप देखेंगे कि आउटर लाइनिंग जो है वो एक्टोडर्म की है, सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है which is going to line your alimentary canal as such is your endoderm। प्लीज रिमेंबर, एलिमेंट्री कैनाल को लाइन करने के लिए हम एंडोडर्म की बात करें। फिर आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है वो ट्रूली डिफाइन करता है एक ट्रू सीलम को बाय सराउंडिंग इट, राइट। सो बेसिकली एक ट्रू सीलम को जब भी आप डिफाइन करेंगे, यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, विच इज दैट कि जो बॉडी कैविटी की बात करते हैं, बॉडी कैविटी हैज टू बी सराउंडेड बाय मेसोडर्म एंड ओनली देन वी कॉल इट एज अ ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, तो ये जो सीलम है, इट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सीलम प्रेजेंट, वी कॉल द ऑर्गेनिजम्स एज एसीलमेट्स, सूडोसीलमेट्स एंड ट्रू सीलमेट्स। एसीलमेट्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी वर्ड के आगे ए लगा देते हैं, यूजुअली व्हेन यू टॉक अबाउट बायोलॉजी, इट बेसिकली मीन्स विदाउट। Acoelomate means without coelom. Okay, so these are the organisms that lack the body cavity between the alimentary canal and the body wall. And the example that we've shown here is of planaria, which is a flatworm, which is a platyhelminth, which is exactly what our question was asking about. फिर आते हैं pseudocoelomates पे. Pseudo means false, right? Pseudopodia you have heard of, right? So pseudo basically refers to false. When we say false coelom, it means that there is some amount of body cavity, but it is not lined by mesoderm. And just a while back, I just told you this concept that a true coelom has to be surrounded by mesoderm. अब क्योंकि यहाँ पे कैविटी है, स्पेस है थोड़ी सी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, लेकिन वो mesoderm से लाइन नहीं है, इस वजह से we call it as pseudocoelomates. The best example is your roundworms, that is Askaelminthus, right? The way I told you in the options. फिर आता है coelomates. They have a proper cavity which is lined by mesoderm, and this is present between the alimentary canal and the body wall. And the best example I already told you is us, humans, right? तो एक बार हम options के हिसाब से देख लेते हैं. Platyhelminths are acoelomates
and they show bilateral symmetry. दिख रहा है सबको? Everybody is understanding this point. As helminthes are pseudocoelomates, like you see that there are basically these spaces that are there, but very important point is that it has like outside these alimentary canal things, they have body cavity there which is pseudocoelom, but it is not lined by the mesoderm, hence it becomes pseudocoelomates and they do show bilateral symmetry, right? Then comes annelida. Annelids are coelomates in nature, because from here onwards basically presence of true coelom, which is defined by body cavity having being surrounded by the mesoderm, is going to exist here, and these organisms show bilateral symmetry. And Ctenophora में तो coelom का सवाल आता ही नहीं है. They are basically acoelomates, and like I told you, these are bioluminescent organisms and show radial symmetry. So what is going to be the right answer for this question? Option D. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? Straight forward question, and अगर आपने इकोलॉजी चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो भी शायद आप जनरल नॉलेज से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते. I'll tell you why and how. Okay, पहली चीज तो यहाँ पर बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की. स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है having enormous different types of species in a given community. All right, when you look at a given area. Ab, when you look at these options, you know from where to where Himalayan ranges, you know from where to where Amazon forests are, you know Western Ghats of India, you know starting from almost Tamil Nadu, covering up some part of Karnataka, Kerala, Maharashtra, and then obviously till Gujarat and these places, right? Then Madagascar, it's an island country in Indian Ocean, but it's a very limited space. So what my point is here, that this Amazon forest, they basically cover up an area of almost 7 million kilometer square. Okay, this is not less. This is a huge area, and let me tell you, this spans across almost 9 countries. You know, can you imagine that? तो हम इस पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, अमेज़न फॉरेस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं हिमालयन रेंज से, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, मैडागास्कर से. तो यहाँ सब जगह भी स्पीशीज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बट because of two important factors. One is the area that I told you, and second important point is that because of almost having like a green kind of a landscape all throughout the year, Amazon forests show the maximum biodiversity. Okay, they show the maximum biodiversity. I'm sure you must have heard about Amazon forest in recent times. जब बहुत सारा, you heard about lot of Amazon fires happening, forest fires that were happening, right? So, I mean, these are all man-made reasons why all this is happening, because of so much amount of global warming and so much amount of, ill treatment of the forest. We really need to take care of the nature, and it is very, very, very essential to safeguard our forests, our, naturally existing ghats and all these places. Why? Because अगर ये जगह को मेंटेन नहीं किया हमने, तो हमारी स्पीशीज की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी. वो जब स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी कम होती है इन नेचर, द होल इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेब गेट्स डिस्टरप्टेड. हमें अभी लग रहा है कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली मेंटेन द प्लैनेट. ओके, क्योंकि अगर ये नहीं किया, देन देयर माइट बी अ पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर लीडिंग towards a time where we are already seeing a lot of proofs of, there are so many floods etc. coming, hurricanes coming, all these turbulent things are coming at places and at times which are not at all foreseen, which are not at all expected, right? All these natural disturbances are happening because of us playing with the nature a little too much, right? So we need to control that point. I know this was a slight deviation from the question, but it is highly essential for us to get back to the ground and understand where we are living and take care of planet Earth, right? And of course the space, but when we reach there, right? So coming back to this point, here an Amazon forest point you have understood. I also want to tell you all one important thing. First point that I told you was the area.
The second important point is that the reason why Amazon forests have a landscape which is green almost throughout the year is because of the amount of rainfall that the forest receives, right? And because of this, having large amount of trees and obviously, you know, wildlife having a place to hide, to hunt, to literally have their natural niche existing there is highly possible. And that is why the maximum biodiversity exists in the Amazon forest, right? So this is one very important point. So this is a beautiful image which can, you know, try to explain you what is exactly a species diversity. So species diversity is having a different number of species that are represented in a given community, right? Further, Amazon forest, you know, I want to actually tell you this point that Amazon forest, I don't know if you know this, are also called as the lungs of the world, right? Because it literally is like, you know, for almost half of the world's species biodiversity, it's like home there. Okay, so because of this and because of the amount of trees that we have, because of the amount of oxygen that is produced from these forests, it contributes to that much amount of oxygen which is existing in our atmosphere, and that's why we call it as the lungs of the world, literally. So Amazon forest is the richest ecosystem on earth and it exhibits highest species biodiversity. It is home for millions of species of plants, of insects, birds and other forms of life. Many still unrecorded by science, which is something that you know, you already know that Robert May said that, you know, there is an approximation of about 7 million species existing there out there, but we have only discovered around 1.7 to 1.8 million, right? So the right answer for this question is going to be option B. Let us have a look at this question. So this is a very interesting question from genetics. Okay, so we have to look at the correct match with respect to the disorders given here and what kind of pedigree do they follow. So पहला option है आपके पास यहाँ पर sickle cell anemia, autosomal recessive trait where chromosome 11 is affected. Yes, this is a very correct statement. Sickle cell anemia does show autosomal recessive kind of pedigree. Okay, present on chromosome 11. I'll talk about this just in a while after discussing all the options. Then comes thalassemia. It's given as X-linked disorder. No, thalassemia is also an autosomal recessive trait. Okay, it's basically a disorder where the oxygen carrying capacity of hemoglobin really reduces because of a certain mutation in an autosome. Okay, then comes hemophilia. Hemophilia is given as Y-linked. No, it is not Y-linked. It is basically a sex-linked recessive disorder. All right, then hemophilia is basically the bleeder's disease where the blood doesn't clot, okay, due to mutation in the clotting factors, due to changes in the clotting factors. Then comes phenylketonuria. This basically is given as autosomal dominant trait. No, this is an autosomal trait, but this is also this also shows autosomal recessive kind of pedigree. ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ऑब्वियसली इनकरेक्ट है. हमारा राइट आंसर हमें मिल गया है, बट एक बार बहुत जल्दी से इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में और इनकी इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहली चीज आई एम टॉकिंग अबाउट सिकल सेल एनीमिया हियर. तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है, दैट इज द जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, the normal hemoglobin, right? But hota kya hai, in normal hemoglobin what happens is that the DNA functions properly, there is no mutation, it leads to the respective formation of mRNA during the transcription process, and जब इसका translation होता है तो जो beta chain, right, let me write it down here, beta chain of hemoglobin होती है, वहां पर 6th amino acid पे हमें focus करना है. So 6th amino acid in normal hemoglobin is glutamine, right, glutamic acid basically, right? So यहाँ पर जो है GLU is representing the glutamic acid. तो 6th position पे normal condition में जब भी ये amino acid रहेगा तो normal hemoglobin बनेगा and इसकी normal oxygen carrying capacity हो जाएगी. लेकिन जब mutation होता है chromosome 11 के ही उस DNA sequence में at this particular position which leads to a mutation, अगर आपको याद होगा GAG has now turned into GUG, है ना? तो अब क्या होगा, GUG जो होता है it codes for valine and not glutamic acid anymore. So this replacement of glutamic acid with valine at the 6th position of the beta chain of hemoglobin
याद है आपको, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन. तो बीटा चेन के 6th अमीनो एसिड पे जब ये रिप्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस द हीमोग्लोबिन दैट इज फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल. इट लिव्स अंडर अ टेंशन काइंड ऑफ थिंग, राइट, एट लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स, एंड इट शोज द sickling of the red blood cells. Because of this, there are chances of this getting clogged in the capillaries, the minute capillaries. Because of this, the oxygen carrying capacity, especially at heights where the oxygen concentration in atmosphere is low, वहाँ पर इन लोगों को बहुत problem होती है. Okay, this is what is called as sickle cell anemia. इसकी inheritance देखते हैं, because the question also had information about its inheritance, its pedigree, right? For example, यहाँ पर आपको हमने एक cross दिखाया है जहाँ पर we have taken an unaffected carrier. It's a carrier, right? तो let us say normal hemoglobin अगर H था and sickle cell वाले को मैं S मान के चलती हूँ. I'm just taking in short these kind of symbol. तो ये जो इंसान है, the first person is going to have the genotype of HS, करेक्ट. और जो सेकंड अनअफेक्टेड कैरियर है, यहाँ पर ये भी HS होगा. H रिमेंबर इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन यहाँ पर, एंड S इज गोइंग टू बी योर सिकल सेल. अब आपको पता है कि नॉर्मली हम इसको HbA और HbS करके लिखते हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन इन शॉर्ट. ऑलराइट, सो अब यहाँ पर क्या होगा, when we do the cross of this affected individual is going to show the genotype of SS, which means उसने दोनों के दोनों alleles जो है वो infected या वो affected carry किए हैं. And unaffected carrier is going to be once again HS, and this unaffected person is going to be HH, who is going to show normal hemoglobin, right? So as you see, because this is carried on chromosome 11, it's an autosomal disorder, and because its inheritance is recessive, that means only when two recessive alleles are coming together, this individual is getting affected. That is why we are calling it as, yes, what are we calling it as? Autosomal recessive trait. All right. Let's go on to the next options that were given. We are talking about thalassemia here. तो thalassemia का जो gene होता है वो होता है chromosome 11 और chromosome 16 पे. And when there is no mutation, hemoglobin is once again synthesized normally. Normal RBC बनेगी and normal ही उसकी oxygen carrying capacity होगी. But what happens when the mutation happens here is that there is abnormal synthesis of hemoglobin, which leads to literally abnormal red blood cell to be carried. This kind of rectangular squarish shape is just for representation purpose. Please understand, ऐसी red blood cell नहीं बनती है. Like, you know, red blood cell is not a square shaped cell. Okay, it's just that this is just a way of depicting it to you that this is not normal anymore, and because of this change, the blood cells at this point are not capable of carrying good amount of oxygen. So because of this reduction in the oxygen carrying capacity of hemoglobin, which is there in the red blood cell, these people suffer from continuous anemia, and this is what is thalassemia. Okay, clear everyone? तो इसकी इनहेरिटेंस अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी इनहेरिटेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम है लाइक द सिकल सेल एनीमिया. इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब कैरियर और कैरियर की ब्रीडिंग हुई है, मेटिंग हुई है, तो यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल सिर्फ 1 in 4 है. इट्स ओनली 25%, राइट. एंड बाकी जो दोनों है 50% ऑफ द जनरेशन इज 50% of the generation here is carrier, but they are unaffected by the disease, and 25% is going to be normal. So this kind of inheritance and result in the percentage is what is followed when autosomal recessive trait is seen. Okay, going ahead, we are going on to thalassemia now. I already told you thalassemia जो होती है वो bleeders disease है, जहाँ पर कि clotting factors ढंग से नहीं बनते हैं. There is some problem with it, and because of that, the person always has a tendency of losing blood in case of any injury. All right. So यहाँ पर this is coded, this gene for the clotting factors etc. is coded on X gene, and that is why I called that is why I called the hemophilia disorder as X-linked disorder. You remember in the question I had made a mention of it, right? तो X chromosome पे जब भी कोई mutation नहीं होता है तो functional clotting factor बनते हैं, जिससे कि जैसे ही कोई blood vessel में injury है या कोई rupture हो रहा है तो simple clot बन जाएगा उसी टाइम पे और bleeding रुक जाएगी. But in case of hemophilia, what happens is that there is some mutation on the X chromosome in the genes that are coding for the clotting factors, which does not lead to
blood clotting, which is where we have put a cross, and this basically leads to the bleeding condition, जहाँ पर continuously bleeding होती है, leads to lack of clot there in order to stop the bleeding. Ultimately there will be a loss of blood, there will be obviously default anemia there. Loss of blood can be lethal if at all it happens at a big scale. What if the person meets an accident and where there is too much of blood loss, the blood doesn't stop flowing out of the wound site because of lack of clot, right? So it can become a lethal condition. अब इसकी जो inheritance है वो मैंने बताया था, वो भी recessive है, but it's an X-linked disorder because it is being carried on the X gene, right? So X chromosome, not gene, right? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है XY, तो obviously males का genotype होता है when you talk about the chromosomal makeup, right? तो unaffected father है and यहाँ पे carrier mother है, okay? तो यहाँ पर क्या होगा? Affected son, XY, whenever the son is going to carry the X gene from mother, then the son is going to be affected. Why? Because आपको पता है ये जो property है, we call it as literally hemizygosity, right? अब यहाँ पर क्या होता है कि in some cases what happens is that when a disorder is X-linked and the mother is a carrier, when a disorder is X-linked and the mother is a carrier of it, and if the mother passes on that affected chromosome to the son, because the son is going to get his Y chromosome only from father, right? तो उसके पास जो X chromosome आएगा वो सिर्फ mother से ही आ सकता है. So when this X chromosome passes on from the mother, affected one, to the son, there is no option for the son to evade this disease because ऑलरेडी एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर वही एक्स क्रोमोसोम उसके पास अफेक्टेड आ जाएगा तो द सन इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टे अफेक्टेड हियर. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये कैरियर मदर है, तो डॉटर के पास इसके सिर्फ सेंडिंग वन एक्स क्रोमोसोम वो सिर्फ 50% चांस होंगे. तो ये जो डॉटर होगी कैरियर होगी क्योंकि यहाँ पे फादर जो थे वो हमारे अनअफेक्टेड थे, है ना? समझ में आया? ये पेडिग्री आपने सीखी भी होगी when you had studied about this chapter, and the remaining 50% are going to be unaffected son and the daughter. So this kind of inheritance is still recessive. अगर if it was a dominant type of a disorder, every time one X chromosome was there, it would have expressed itself, right? Okay, going on to the next one, which was your phenylketonuria. Phenylketonuria में क्या होता है? Basically the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine. Now these are both aromatic amino acids, है ना? Phenylalanine और tyrosine जो है ये दोनों ही aromatic amino acid है, दोनों ही neutral amino acid है. होता क्या है कि जब भी phenylalanine होता है, it has to be, there are basically very big and important transporters, especially in the brain, which allows these transport of large neutral amino acid. And why large? Because their size of these phenylalanine and tyrosine amino acids are large. Okay, तो इनके लिए specific transporters होते हैं, वहाँ से ये phenylalanine और tyrosine जो होते हैं जाते हैं brain में, इनका transportation होता है and they help in regular functioning of the brain. Now what happens is that if at all this enzyme which converts phenylalanine into tyrosine gets mutated, उसकी वजह से क्या होता है कि phenylalanine tyrosine में तो convert होगा नहीं. Obviously this will lead to a large accumulation of phenylalanine in the body, right? This basically saturates the transporters in the brain and hence ultimately physiologically speaking this disorder, this phenylketonuria leads to mental retardation. Many children find it difficult to understand कि अगर phenylalanine body में इकट्ठा हो रहा है तो why does it lead to mental retardation? Okay, so this is the point. आप समझे मैंने क्या बताया कि brain में transporters होते हैं जो कि large neutral amino acids के लिए हम लोग उनको literally LNAT transporters बोलते हैं. तो उनके transportation में और हर तरीके के large neutral amino acids जाने की जरूरत होती है. If phenylalanine accumulates, this kind of blocks the transporters and does not allow, and in fact the body doesn't have enough of the other amino acids to literally go get transported and play their respective roles. तो इन सब चीजों की कमी की वजह से and phenylalanine के accumulation की वजह से ये disorder होता है, right? अब इसके inheritance की बात करते हैं तो ये भी एक autosomal trait है and ये भी एक recessive trait है, like you are very clearly seeing in this pedigree. Unaffected carrier है, unaffected
अनअफेक्टेड कैरियर है, इनकी मेटिंग हुई, ऑब्वियसली इसकी जो जनरेशन बनी उनमें से सिर्फ 25% हमें अफेक्टेड दिख रहे हैं, 50% अनअफेक्टेड कैरियर है एंड 25% कंप्लीटली अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है. दिस काइंड ऑफ पेडिग्री इज सीन ओनली in case of recessive and autosomal trait. Why? Because we know that this gene is present on the autosome here. Okay, so for the question, what is going to be the right answer? It's going to be option A. Let us have a look at this question now. Which one of the following is the most abundant protein in animals? ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं. यहाँ पे पहली चीज तो एनिमल प्रोटीन जो होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलेजन. सो द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इज गोइंग टू बी कोलेजन. ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, यू नो, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, द आंसर इन दैट केस वुड हैव बीन रुबिस्को. ओके, रुबिस्को क्या होता है? रुबिस्को क्या होता है? रुबिस्को स्टैंड्स फॉर RUBP, रिबुलोज 1,5 bis phosphate carboxylase oxygenase. It's an enzyme of dual activity which can work like oxygenase, which can work like carboxylase. Plants में present होता है. And needless to say, the biomass of plants existing around the planet is much more than the biomass of the animals existing on the planet. And that is why अगर overall question पूछा गया होता तो हम रुबिस्को मार्क करते, क्योंकि इसका amount nature में ज़्यादा है in comparison to collagen. But because the question is asking only about the animals here, the answer is going to be collagen. Okay? बाकी एक बार क्या क्या प्रोटीन्स है उनको भी याद कर लेते. तो कोलाजन तो जैसा मैंने आपको बताया, इट्स बेसिकली द इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन. कोलाजन एनिमल प्रोटीन है. लेक्टिन की बात करते हैं, लेक्टिन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, बट ये हेल्प करते हैं रिकग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे. Okay, they are used to identify cells that contain specific carbohydrate molecules on their surface. So it basically works like a surface receptor. Okay, surface marker, surface receptor, आप कुछ भी बुला सकते हैं उसको. So concanavalin A is one of the best examples of lectin, जो कि obtain किया जाता है जैक बीन से, जिस स्पीशीज से हम उसे obtain करते हैं उसका नाम होता है Canavelia species. Okay, this is just like a purified form of lectin that we are obtaining from here. Okay, going ahead further, insulin तो आप जानते ही हैं. Insulin is basically a hormone which is secreted. It's a proteinaceous molecule only, but it's a hormone which is secreted by the beta cells of pancreas, which is responsible for controlling the blood sugar. क्या करता है इंसुलिन? पहली चीज, it allows the uptake of glucose into the cell. Almost 2/3 of the body cells पे ये काम करता है. दूसरी important चीज, it converts whatever excess amount of glucose is there in the blood into glycogen and allows it to be stored in the liver. Okay, ये होता है आपका इंसुलिन का फंक्शन. और था आपके पास ऑप्शन एक हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज द आयरन बाउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द रेड ब्लड सेल्स, जिसका काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, एंड दिस बेसिकली बाइंड्स टू विद ऑब्वियसली अ सेंट्रल आयरन, एंड दिस बेसिकली हेल्प्स इन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन. सो हीमोग्लोबिन वर्क्स लाइक एन ऑक्सीजन कैरियर molecule. But for this question, it was being asked about most abundant protein in animals. The answer is going to be collagen. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब. Select the option including all sexually transmitted diseases. तो यहाँ पे आपको कुछ set of diseases दिए गए हैं ऑप्शन ABCD में. You have to choose the set which represents the diseases which are all sexually transmitted diseases. Okay, पहला ऑप्शन है AIDS, which stands for acquired immunodeficiency syndrome. Right? So this is definitely caused by HIV, which is a virus, but it's a sexually transmitted virus which can be directly transferred by bodily fluids. Talking about malaria, मलेरिया तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है. तो प्लाज्मोडियम तो एक पैरासाइट है, एंड इट डज नॉट बेसिकली ट्रांसफर सेक्सुअली. इट्स नॉट एन एसटीडी, इट ट्रांसफर्स बेसिकली फ्रॉम द मस्कीटो वेक्टर, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. राइट? फाइलेरिया की बात करें तो ये भी एक वर्म से होता है. वर्म मतलब नेमाटोड से होता है, विच द नेम ऑफ विच इज वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी. ठीक है, तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है. ऑब्वियसली एड्स इज द ओनली पॉइंट विच इज करेक्ट हियर. सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, कैंसर दिया है, एड्स दिया है, सिफिलिस दिया है. कैंसर बेसिकली कार्सिनोजन से होता है. इट हैपेंस थ्रू वेरियस डिफरेंट एजेंट्स एंड इट इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. एड्स यस इज एन एसटीडी. Syphilis also, yes, it's an STD, basically caused by a bacteria named as Treponema pallidum. Okay, लेकिन क्योंकि कैंसर सही ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ए के जैसे ही. आगे चलते हैं, गोनोरिया,
syphilis, genital herpes. Gonorrhea is caused by basically Neisseria gonorrhoeae, the bacteria, and syphilis तो मैंने बताया ही कि Treponema pallidum से होता है और ये दोनों ही STDs हैं. Talking about genital herpes, yes, this is caused by herpes simplex virus, HSV जिसे हम बोलते हैं, and this is also an STD. तो obviously option C looks like the correct answer right now. ऑप्शन डी पे चलते हैं. गोनोरिया, येस इट्स एन एसटीडी. मलेरिया, नो इट्स नॉट एन एसटीडी, ये तो आप जानते ही हैं. जेनिटल हर्पिस, जैसा मैंने अभी बताया, इट्स एन एसटीडी. तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मलेरिया इसमें जो है वो गलत है. मैं एक बार बहुत जल्दी से आपको क्विकली लिस्ट डाउन करके दिखा देती हूँ डिजीजेस एंड जो भी डिजीज हम लोग को दी गई थी यहाँ पे क्वेश्चन में, उनसे और उनको उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स है, उनका जो रीजन है, दैट इज व्हाट आई हैव लिस्टेड डाउन हियर. एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, व्हिच इज अ वायरस. This is a sexually transmitted disease. Talking about syphilis, syphilis is caused by Treponema pallidum, another STD. Talking about gonorrhea, gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae, another STDs which causes, you know, genital warts, etc. Then talking about genital herpes, yes, it is a sexually transmitted disease which is caused by, the causative agent is herpes simplex virus or HSV. ठीक है, आगे चलते हैं. मलेरिया दिया गया था, ये सब नॉन एसटीडीज है बेसिकली. इनका मोड ऑफ ट्रांसफर प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड ये ट्रांसफर होता है मस्कीटो से, ना कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, राइट. देन कम्स वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी. दिस इज बेसिकली अ नेमेटोड एंड दिस डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड सेक्सुअली अगेन. एंड कैंसर तो कार्सिनोजन से होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि इसका कोई भी ट्रांसमिशन सेक्सुअली ट्रांसमिशन से नहीं हो सकता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टे एज ऑप्शन सी. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय. ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पर ये जो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये पानी में ग्रो जरूर होते हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो मैक्सिमम लैंड प्लांट्स की तरह पानी के बाहर ही होते हैं. इनका जो मेन स्टेम है, द एक्सेस व्हिच बेयर्स द फ्लावर्स इज लाइंग क्वाइट अबव द वाटर. इस वजह से यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो या तो विंड से हो सकता है लाइक एनी अदर लैंड प्लांट, या फिर वो सिंपली इंसेक्ट से हो सकता है. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड एंड नॉट बाय वाटर. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वेयर मैक्सिमम चिल्ड्रन वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये पॉइंट. जरूरी नहीं है अगर आपसे कोई लोटस भी पूछ ले तो आप जाकर के उसका आंसर मार्क करके आ जाएंगे वाटर. तो ये सही नहीं है क्योंकि लोटस तो आपने कभी लाइफ में देखा ही है दैट इट बेसिकली लाइज क्वाइट अबव दी वाटर, राइट. तो क्योंकि वो पानी के बहुत ऊपर होता है तो यहाँ पर भी पॉलिनेशन या तो विंड से या मैक्सिमम टाइम एक्चुअली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विद विंड इज टर्म्ड एज एनिमोफिली एंड विद insects it is called as entomophily, right. तो बाकी एक बार मैं इससे रिलेटेड इमेज दिखा देती हूँ. दिस इज वाटर हायासिंथ, दिस इज वाटर लिली, वेयर यू कैन क्लियरली सी दैट द फ्लावर्स आर लाइंग मच अबव द वाटर. तो पोलेंस को जाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं है. पोलेंस को जाने के लिए या तो हवा की जरूरत होगी या फिर कोई इंसेक्ट्स उनको लेके जाए. इस तरीके से सी नाउ हाउ दिस बी इज टेकिंग द पोलन टू द रिसेप्टिव फ्लावर, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोलिनेशन बाय विंड इट इज गोइंग टू बी traveling with the help of wind like this. Okay, so pollination by wind called as anemophily, right, and pollination by water would be termed as entomophily, right. ठीक है, so right answer हमारे लिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी. I hope you all got that right. Let us have a look at this question. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of. ठीक है, तो पहली चीज तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ इस तरीके की टेक्निक होती है देखने में. यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक ट्रे रहती है जहां पर बफर सोल्यूशन होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो होता है यहाँ पर एक सॉलिडिफाइड अगारोस जेल का स्लैब रहता है. आपने अगार और अगारोस के बारे में बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में. यू हैव लर्न्ड मेजरली अबाउट इट फ्रॉम द प्रोडक्शन फ्रॉम दी रेड एल्गे, राइट. तो मैं सेम उसकी बात कर रही हूँ, जस्ट दैट हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अभी अगारोस जेल की, क्योंकि यहाँ पे हम बायोटेक में एक टेक्निक की बात कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल कि इस तरीके से एक स्लैब होता है, एंड इस स्लैब के अंदर जो होते हैं हम छोटे छोटे वेल्स बनाते हैं जहां पे डीएनए का सैंपल डालते हैं. ये दिख रहा है आपको,
ये जो पोर्शन मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, है ना, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे से लिटरली गड्ढे बने हुए होते हैं, वेल्स बनाए हुए होते हैं, जहां पर हम डीएनए का सैंपल लोड करते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, इसका नाम जेल क्यों है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया, बिकॉज वी आर यूजिंग अगारोस जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए बिकॉज फोरेसिस बेसिकली इज सेड विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट, एंड इलेक्ट्रो मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, राइट, और करंट, इलेक्ट्रिकल करंट मतलब यहाँ पे करंट की बात हो रही है। अब यहाँ क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो पूरी ट्रे है इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इट इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द अदर साइड। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज when you supply current to this whole apparatus, क्योंकि आपने इसमें एक करंट कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, एक सोल्यूशन डाला हुआ है ना, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो करंट को कंडक्ट कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि जिन वेल्स में हमने डीएनए सैंपल लोड किया था ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा कुछ इस तरीके से। याद है आपको, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये साइड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, तो जब नीचे की साइड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की और डीएनए का सैंपल हमने दूसरी साइड लोड किया हुआ है, इस साइड लोड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली डीएनए कहाँ मूव करेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स दी positively charged electrode which is called as anode, right? This kind of movement under the influence of electricity or electric current is what is called as electrophoresis, and gel वो medium use कर रहे हैं, gel वो slab की तरह use कर रहे हैं, इसलिए हो गया gel electrophoresis। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जेल में ना हम लोग डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड और ETBr। ये जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है ये क्या होता है, एक्चुअली बाय प्रॉपर्टी इट्स अ कार्सिनोजेनिक एजेंट, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये डीएनए के बीच में जाके इंटरकैलेट कर जाता है, इट बेसिकली गोज इनसाइड एंड सिट्स इनसाइड द डीएनए। तो होगा क्या, डीएनए का सैंपल जहां जहां मूव करेगा, जो कि हमें ऑब्वियसली दिख नहीं सकता है, सिर्फ ट्रैकिंग डाई से हम ट्रैक कर सकते हैं, पर यू नो डीएनए इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, हाउ कैन इट बी विजिबल विद द नेकेड आईज, राइट? लेकिन व्हाट वी डू इज दैट वी पुट दिस स्टेन which is ethidium bromide, which is basically which gives a fluorescent color, you know, beautiful orangish colored bluish orange के tinge वाले bands दिखते हैं when we keep it under UV light, okay? So something like this is what is visible, ये इस तरीके से दिखता है, बहुत ही सुंदर bands दिखते हैं इसके, right? This is the same agarose gel slab that I showed you in the previous slide। जब इसमें DNA sample आप move करेंगे under the influence of electricity, you basically allow the migration of DNA under the influence of electric field, and इस टाइम पे जहां जहां DNA मूव करेगा उसके साथ में इथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि अंदर इंटरकैलेट हो चुका है, अंदर ज्वाइन हो चुका है, उस पर अटैच हो चुका है, तो वो भी मूव करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद हम इस जेल स्लैब को उठा के यूवी लैंप के नीचे रखते हैं तो हमें एग्जैक्टली ऐसी ही एक इमेज दिखती है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये डीएनए बैंड है, यहाँ पे डीएनए बैंड है, यहाँ पे डीएनए बैंड है, यहाँ पे डीएनए बैंड है, ये सारे डीएनए बैंड्स हैं, राइट? So these places where the fluorescence is seen is actually corresponding to the DNA bands, okay? समझ में आया आप सब लोग को? तो visualization of DNA bands is done with ethidium bromide which binds to DNA and the fluorescence is seen under UV light and this is what makes the band visible। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपको राइट आंसर दिख रहा है, ऑब्वियसली आप समझ गए हैं, लेकिन आई स्टिल डिस्कस द इनकरेक्ट ऑप्शन विद यू। एसिटोकार्माइन जो होता है ना, ये भी एक ऐसा स्टेन है, डार्क रेड कलर का अपीयरेंस देता है, विच इज यूज्ड टू स्टेन न्यूक्लिक एसिड्स, बट दिस इज यूज्ड इनसाइड द सेल। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बताया इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इनफैक्ट जब हम उस जेल को हैंडल कर रहे होते हैं वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू वेयर द ग्लव्स व्हाइल वी आर हैंडलिंग दोज स्लैब्स एटसेट्रा। सो माय पॉइंट इज दैट इथिडियम ब्रोमाइड कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड अ लिविंग सिस्टम यू कैन नॉट यूज इट, राइट? बट अगर आपको सिंपली न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करना है तो आप एसिटोकार्माइन स्टेन यूज करते हैं। ओके, सो एसिटोकार्माइन वाले ऑप्शंस आपके ऑब्वियसली यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। दूसरा था इथिडियम ब्रोमाइड, दो ऑप्शंस में दिया हुआ था, लेकिन एक में इंफ्रारेड दिया, में UV रेडिएशन दिया है। I already told you that ethidium bromide gives these bands and appears its with its fluorescence color under the effect of UV light. ठीक है, so the right answer for this question is going to be option D. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। Secondary metabolites such as nicotine, strychnine,
caffeine are all produced by the plants for their which of the following? Defense action, effect on reproduction, nutritive value या फिर growth response. तो मैं आपको पहली चीज याद दिला दूं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कुछ केमिकल्स या कॉम्पाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि ये लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ में लिटरली पाए जाते हैं, what happens is that their role is, even though not 100% clear, but they do not really play a role in the primary functions of the organism. मतलब जो भी उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, मेन जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ये सारी चीजों में जो मेटाबोलाइट्स काम करते हैं उन्हें हम यूजुअली बुला देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. लेकिन इनसे ज्यादा अगर कुछ एडिशनल फंक्शन करने हैं, एक्स्ट्रा सर्वाइवल फिटनेस देनी है या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देने हैं ऑर्गेनिज्म को, तो ये सब जो चीजें होती हैं, these are all provided by secondary metabolites. All right, so let me tell you exactly what it says. Secondary metabolites are the molecules which are not essential for the growth of organism, but they help in organism to combat or handle various different types of stress. Right? For example, let me call it out here. Basically, निकोटिन जो कि आपको पता है कि टोबैको प्लांट से आता है, this helps the plants in repelling insects and other herbivores. So this is working like a secondary metabolite. मतलब कुछ प्राइमरी ग्रोथ में काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एडिशनल उसको herbivores से और बाकी सब जो insects वगैरह हैं उससे बचाने के लिए काम कर रहा है. राइट? इसी तरीके से caffeine, which is obviously obtained from coffee plant, right? It acts as a natural pesticide. Then comes strychnine, which is a poisonous alkaloid which prevents the plant from being eaten. In fact, इसीलिए हम इस tree को, the strychnine tree is actually also called as poison nut. Poison nut. Yep. ठीक है. So this strychnine tree basically produces this very very poisonous alkaloid. So what I'm trying to say here is that these secondary metabolites play a role in these additional function. So इस question का right answer क्या हो जाएगा? Option A, क्योंकि effect on reproduction, nutritive value, growth response, ये सब जो functioning है ये सब तो primary metabolite देखते हैं. Right? I hope you all got that question correct. Let us have a look at this question now. How many true breeding pea plants, plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with the contrasting traits? Now this is a very straightforward question, just that कि क्या होता है कि कई बार बच्चों को numbers में confusion हो जाता है. So you have to understand कि इन्होंने पूछा है कि कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट वराइटीज वर सिलेक्टेड एज पेयर्स. तो जब पेयर्स की बात की तो आपको पता ही है कि यहां पर द आंसर इज गोइंग टू बी 14. ओके. Now here the point, let me just put a little more emphasis on the point which students find difficult to understand. I'll still put a little more emphasis on this point so that you all understand, which were similar except in one character with the contrasting trait. तो अब यहाँ से आपको समझना है कि exactly question में क्या पूछा गया है. When we say they were similar except in one character with contrasting trait, we are talking about the characters that are listed here and the contrasting traits that exist. ठीक है. तो अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है सीड है, यहाँ पर सीड की शेप दी गई है. Then Mendel also considered the seed color, right? Then flower का तो color था ही considered. Then there was pods की जब हम बात करते हैं pea pods की, then इसकी जो shape थी, मतलब basically whether it was full, that is inflated, or it was kind of constricted kind of pod, या फिर जो color of pod है वापस से वो भी consider किया गया था. stem के बारे में बात करेंगे तो obviously उनकी height considered थी, right? And what was considered was the flower position. So मैं short में लिख रही हूँ यहाँ पे flower position. All right? Don't go by the spelling. I have written it down in short, right? Whatever can fit in there. So axial pods हैं और flowers along with that है, and terminal pods है जहाँ पर obviously flowers भी उसके साथ में ही है. तो ये जो basically आपको दिख रहे हैं, these are all the traits of the pea plant. आपको पता ही है हर एक character की जब हम बात करते हैं उसके alternate traits हो सकते हैं, है ना? So इसीलिए इस question के लिए आपका right answer क्या हो जाएगा? Option A, 14. Let us have a look at this question now. Which of the following is not an attribute of a population?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, आपने इसको इकोलॉजी यूनिट में पढ़ा है, तो जो पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है तो आप किस किस एट्रीब्यूट से स्टडी करते हैं? यू टॉक अबाउट सेक्स रेशियो, यू टॉक अबाउट द बर्थ रेट, द डेथ रेट, द इमिग्रेशन एंड द एमिग्रेशन दैट इज हैपनिंग विद इन दैट पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू population is species interaction। ठीक है, स्पीशीज इंटरैक्शन क्या होते हैं? ये वेरियस डिफरेंट तरीके के इंटर रिलेशन होते हैं which can be either direct or indirectly existing between given species. So for this question not an attribute is obviously going to be species interaction. Sex ratio आपको पता ही है, जब हम मेल और फीमेल का रेशियो देखते हैं, right? Then mortality and natality भी पता है, mortality is the death rate, natality refers to the birth rate, right? So very quickly let me just tell you what exactly species interaction first. Species interaction जो होता है, it refers to direct and indirect interrelationship that are existing between different organisms. They can be direct dependencies or direct relationships, or they can be indirectly also related. Few best examples of these kind of species interactions that you have learned about in your syllabus are basically neutralism, mutualism, commensalism, competition, amensalism, predation, parasitism and parasitoidism, right? Neutralism क्या होता है? जब दोनों ही species को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, it's like a neutral relationship, right? Mutualism is when both the species basically gets kind of benefited by the relationship, by this kind of symbiotic relationship. Commensalism is when one is getting benefited and the other one is staying at zero. That means is not getting affected at all. Then competition is when both the species or both the members or organisms of that relationship are getting harmed, right? So minus minus. Then amensalism is when one of them is getting harmed and the other one is staying neutral. Examples of all the different relationships that are given here you've already learned as a part of your syllabus, but they can be asked in different questions. Okay, this is a very important topic. You should try to revise this well. Coming to predation. Predation is when the predator gets benefited but the prey gets harmed, right? So predator is at positive situation and prey is at the negative situation here. Parasitism. Parasitism is when one is benefited and the other one is harmed. And then comes parasitoidism, where once again the relationship is similar. Parasitoid or parasite में exactly फर्क क्या होता है? I am talking about these particular points, right? So parasites, usually what happens is that parasites don't really kill the host as such, right? They live with the host. They kind of don't kill the host. They might harm the host but not kill the host. Parasitoids is a little more of an aggressive kind of relationship where it might lead to the killing of the host as well. Okay, now going on to the correct options in the sense with respect to population attributes. Population attributes जो question में दिए गए थे वो थे sex ratio, natality and mortality. Sex ratio क्या होता है? It is the ratio of males to females in a given population. Sex ratio, right? Natality, ratio of number of births to the size of population. अब ये जो होता है ना, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? This is done, that is the number of live births per 1000 number of individual, of course, in a year. Okay, and the same goes with the mortality rate also. The ratio of number of deaths to the size of population. This is also done per 1000 individual per year. Okay, so this is what is about the population attribute. Which is not a population attribute is going to be species interaction. Let us have a look at this question now. Snow blindness in Antarctic region is due to. ठीक है, तो स्नो ब्लाइंडनेस पहली चीज तो एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पर ड्यू टू वेरी हाई रिफ्लेक्शन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द स्नो, द intensity of the light that falls on the eyes is very strong. Okay, especially because of the UVB radiation. What happens is that the cornea, it starts getting inflamed, it starts having a kind of heavy amount of inflammation, and this is exactly what is snow blindness. Okay, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्नो ब्लाइंडनेस इन द एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो is one contributing factor, but that is not the core factor of it, right? Besides, we have a better option than that, so we will not go with option A.
डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज, तो इंफ्रारेड रेज से जो डैमेज होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इन ऑर्डर टू कॉज दिस काइंड ऑफ डैमेज, राइट? सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रिजेक्टेड. फिर आता है फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर. ये एक गलत ऑप्शन है. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि एक्चुअली आईज वगैरह का या जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो इतनी आसानी से फ्रीज नहीं हो सकते हैं. द रीजन इज we have such beautiful capacity of our blood to be circulating so nicely that it continuously keeps the body warm, and because of this property, you know that we are basically homeotherms, where we are maintaining homeostasis of even maintaining the temperature. आपको पता है कि अगर बाहर का temperature -20 डिग्री सेल्सियस है तो our body doesn't become -20 डिग्री सेल्सियस, right? So this capacity of our body to maintain a constant internal state is what is called as homeostasis. एंड होम्योथर्मल जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ, होम्योथर्म, दैट इज बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, एंड दिस हैपेंस. वन ऑफ द बेसिक रीजंस व्हिच यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इज क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट देयर इज जनरेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट हीट रियली नेवर अलाउज द बॉडी टू बी frozen or the fluids to be frozen unless and until somebody is like badly frostbitten for multiple number of days, and of course it depends upon that person's health also, but तब तक बॉडी फ्लूइड्स फ्रीज होना नहीं स्टार्ट होते हैं. ओके, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया. फिर आता है ऑप्शन डी, विच इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट व्हिच आई वाज रेफरिंग टू. इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन इज द एक्चुअल रीजन व्हाई cornea starts getting inflamed and causes snow blindness. Like literally the visibility becomes very, very blurred, very, very low, that kind of thing. So here, what is cornea? It is basically the transparent part of the eye that covers the iris, pupil and anterior chamber. आपने eye के बारे में neural control and coordination chapter में already काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है ना? So this is what is your cornea, and it basically helps in focusing light rays on the retina. ये तो आपको पता ही है. तो अब होता क्या है कि जब भी UVB radiation बहुत ज़्यादा जो पड़ती है cornea के ऊपर, that causes inflammation of cornea and ultimately leading to literally something called as snow blindness. Okay, so what is going to be the right answer for this question? Option D. I hope you all got the right answer for this question. So children, that was about the whole discussion of your NEET 2020 paper. हमने ना ही सिर्फ सही options को discuss किया है, we have also covered all the details relevant to that particular question. पूरी सीरीज को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, आप सब क्वेश्चंस के आंसर्स को देखिए, आप समझिए कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअली more than understanding what you are doing right, it is more important, much more important to understand where you are going wrong and rectify it when you have time in your hand. ठीक है, तो जितना टाइम बचा है उसमें बहुत ही अच्छे से जो भी इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं आप करते हैं, मतलब जो भी इनकरेक्ट बेसिकली आंसर्स आपके आए हैं उसको करेक्ट कीजिए, उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए, एंड लाइक आई कीप सेइंग, प्रैक्टिस, go back to the relevant concept, revise it if you have got it wrong, even if you have got it correct, just understand the reason why did you attempt that answer, right? तो वो आपने क्या सही रीजन से अटेम्प्ट किया था उसको, क्या आपने कुछ तुक्का मार के किया था, डिड यू जस्ट लाइक डू इट बाय फ्लूक? ट्राई अवॉइडिंग डूइंग दैट, बिकॉज दैट ओनली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ योर नेगेटिव मार्किंग. व्हेन वी आर अपियरिंग फॉर अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ सही आंसर के मार्क्स नहीं होते, द चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स इन द नेगेटिव मार्किंग also costs us a lot. So you have to really restrict it to just a few, like a limited number. अगर 180 questions का पेपर है तो आप मैक्सिमम जो नेगेटिव मार्किंग में लूज करना थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आपके बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं तो सिर्फ वो 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड नॉट लाइक 5 क्वेश्चंस इन बायो. ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज pay attention, please focus on not having negative marking. It's very, 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 very important. So keep watching the BYJU'S channel, keep watching all these past year papers that we are discussing. Very, very important. Keep practicing as much as you can till the time you really become confident at that particular topic. We'll meet up very soon. Till then, keep learning.